सार्थक अपना माइक्रोफोन ऑन करो। मैंने अनम्यूट करना अलाउ किया है। सार्थक अपना माइक्रोफोन ऑन करो। सार्थक आपकी सीलिंग बहुत अच्छी है। नाउ यू जस्ट गिव मी द आंसर कि आप होमवर्क क्यों नहीं करते। बहुत अच्छी सीलिंग है, नाइस टू सी। आपकी सीलिंग बहुत प्यारी है और आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं। अब मुझे ये बताइए आप होमवर्क क्यों नहीं करते। देन अदर देन दैट, ये जो लिस्ट में नाम है उसके अलावा कोई भी बच्चा दे आर नॉट एट ऑल टेकिंग द थिंग्स सीरियसली। सो दिस वुड बी जतिन। जतिन का भी नाम नहीं है इसमें। जतिन नेवर सेंड्स होमवर्क। राशि, आप भी होमवर्क नहीं सेंड करते। वाई बेटा? मैम मैंने किया था पर इसके पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था। नहीं अटेंड किया। Be very much particular with the lectures attendance as well as homework. This is the things on which we will do your marking and send your form to board examination now. So be very particular about that. Fine? Where is Sarthak? What is your reason, Sarthak? Fine. So I think we have enough participants now. So I would start the recording. Okay. And let us start with our session. What was the last thing we did in the last class? Ma'am, we have completed Communication characteristics. Kiske characteristics? Communication. Okay. It was on which page? Ma'am, 69. 69. 69. तो आई थिंक इट वुड 73 डाल के देखते हैं होगा शायद। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, methods of communication. Have we completed the methods of communication? No ma'am. No ma'am. No, ma'am. So we have to and we have completed the characteristics of communication. Yes or no? Yes ma'am. So next will be your methods of communication. In that we have oral, written. We have oral communication, we have written communication, visual, which you can see, audio, which you can listen, audio visual, which you can see as well as listen, silence. Okay, so these are the different things. Oral में हमारे पास में आ जाता है conversation which you have with your friends and families, है ना? आप अपने friends और family के साथ में conversation करते हो about different problems. If you are having support problem, or you will have conversation with your teacher. आप अपने teacher के साथ conversation करते हो. You may have dialogue with your teacher, talk. You can say attend a lecture. Right now we are having this oral communication. मैं आपको lecture दे रही हूँ, है ना? Or we work in a group. So we are in a group and we are discussing about your methods of communication with the help of oral, but it also have the visual as oral as well as visual. नेक्स्ट इज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. तो रिटन में हम लिख कर भेजते हैं. जैसे हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आई टेल यू कि इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू सेंड मी द मैसेज. यस और नो? क्योंकि सबका नेटवर्क का इशू होता है, बोलते हैं सुनाई नहीं देते. तो आप लोग मुझे लिख कर अगर कोई मैसेज भेजते हो तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ. तो दैट विल बी अ रिटन कम्युनिकेशन. You give me written communication, I respond by oral communication.
एंड इन सम केसेस अगर कोई मुझे रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड करेगा बाय व्हाट्सएप, आई विल अगेन सेंड देम द रिटर्न कम्युनिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज योर, या कई बच्चे मुझे मैसेज करते तो आई गिव ओके, so that would be written communication. You gave me instructions or you gave me some information, I replied to your information, that would be written communication. The newspaper में हम लोग रोज न्यूज देखते हैं about the what is happening in this whole world. घर से बाहर तो हम अब निकलते नहीं हैं, है ना, सब घर पर ही रहते हैं, मम्मी पापा घर से बाहर निकलते हैं. इवन पेपर देने के लिए भी हम आपको बोलते हैं कि मम्मी पापा को भेजो, आप खुद मत आओ. तो न्यूज़पेपर इज द मीन्स ऑफ communicating information about things which is going outside the world. Magazines, newspapers comes every day, magazine comes after 7 days, 15 days, a month or something like that. It is also newspaper but kind of a newspaper, but here we have a club information of few days, 15-20 दिन की information. जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स अगर न्यूज़पेपर भी है और उसकी मैगजीन भी है, तो अगर आपको 15 दिन का डिटेल्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर मैगजीन, अगर आपको डेली चाहिए तो यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर. पैम्पलेट्स अब एग्जाम होती है उसके बाद में आपको बाहर मिलते हैं ना कि भाई आप हमारे शॉप पे आइए, यू परचेज फ्रॉम अवर शॉप, या आप हमारे यू कैन से इंस्टीट्यूट पे आइए. तो दैट आर पैम्पलेट, एक पीस ऑफ पेपर देता है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, दैट इंफॉर्मेशन इज केप्ट देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एडवर्टीजमेंट. सो एडवर्टीजमेंट में आपके क्या होता है, टीवी पे आप देखते ही हो, और सो नॉट ऑन टीवी बट यू कैन सी इन न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स यू कैन सी. आप पेज खोलोगे तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आती है, न्यूज़ बाद में आती है. सो व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? इट इज अ पेड न्यूज़ फॉर गेटिंग योर अटेंशन so that you can purchase the product from the people who are advertising the concept. Letter writing, आप लोग एक इंग्लिश में लिखते ही हो लेटर. You have formal letter you may write it to your principal, your teacher, etc. Informal you write it to your friends, families, etc. There is a certain format of letter, address, this and that you might have learned till your 10th standard, as well as you might be learning till date as well. It comes under commercial. अगर commerce की बात करें तो when you will go in college you will have one whole subject of CC, that is commercial communication. How to communicate with the world outside for the business purpose or to improvise business, that you will study in that whole subject as such. Next is your manuscript. Manuscript are a kind of letters which you would be sending to the party around. Email, you all know what is email, etc. That is all your written communication. Next is your visual communication. Visual मतलब which you can see and learn. अब visual में आपके हैं maps. Maps are something you make in your social science. आपने बनाई है ना. अभी भी आपके सब्जेक्ट अगर किसी का ज्योग्राफी है सब्जेक्ट ऑफ 12C तो यू दे माइट बी मेकिंग मैप्स टिल डेट. फिर पिक्चर्स है. yesterday only I used with this phrase that picture speaks more than 1,000 words. ठीक है. एक्चुअली इट इज एक्शन स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स, बट उसको थोड़ा पैराफ्रेज चेंज कर दिया कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स, विच मीन्स by seeing we understand. We don't need to use the words, conversation, etc. Instead of making a person understand, writing an essay on or making conversation about what is elephant, just show the picture of elephant. Things will be quite clear, है ना, crystal clear कि उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है. तो पिक्चर्स it becomes easy for us. Figures, जहाँ पे आप अगर हाथी नहीं दिखा सकते तो आप उसका मैनीक्विन जैसा बनाते हैं ना, लाइक हाथी को पिक्चर देख के पता लगेगा वो इतनी सी पिक्चर में इतना सा दिखाई देगा. लेकिन अगर हम बड़ा सा हाथी का एक मैनीक्विन फिगर बनाएंगे तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द शेप. एंड डायनासोर है फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट हैव डायनासोर नाउ, बट उसके हम लोग फिगर्स बनाते हैं, एक्शन फिगर्स बनाते हैं. वी हैव 3D फिगर्स एज सच विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डायनासोर्स वुड लुक लाइक एट दैट एरा. ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है. Then so that is means of communication about what things are not possible visually. Then graphs you use in statistics. Colors कैसे आप colors use करते हो for communication. For example, आप एक उस पे खड़े हो, किस पे, you are standing on one क्या बोलते हैं ना, सिग्नल, और अगर रेड कलर आएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? What does red indicate as a color? Stop. Stop your vehicle. And what yellow suggest? To get ready. हाँ. And green?
Go. You तो can किसी ने go. हाँ yes, so no one said any a single word but you understood because of colors, because every color symbolize something. Same way symbols, when you go on a highway you would find a picture of a what we say petrol pump. So what does it suggest? एक पिक्चर होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दे पुट अ पिक्चर. व्हाई दे डू दैट? सपोज इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आप अगर नॉर्थ इंडिया से हो और अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडियन लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर टू अंडरस्टैंड. अगर आपको या फिर सपोज कोई साउथ इंडियन से गुजरात में आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड गुजराती, एंड अगर गुजरात से वहाँ जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट. सो व्हाट दे विल डू इज दे विल पुट अ सिंबल. For example, symbol of hotel would be one spoon and one fork. अगर हाईवे पे अगर आपको स्पून और फोर्क का सिंबल दिखे तो एक इतनी दूर के बाद में there is a hotel. Got it? So that those symbols, those signs helps you to understand the things. Clear? So this is your visual. और audio में आपका tape recorder, radio, telephone, teleconference, etc. Right now we are having teleconference. You are using your telephone. I am using my laptop as well as telephone, and we are having. But in this case, जैसे प्रियांशु है, it is he is having his camera is off, so he is having teleconference. But for me, it is audio visual. So अगर मैं आपको सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाऊं तो that would be teleconference. But if I will show you my face as well, so that would be, you can say, visual conference. Okay, this is all about your audio. Let us move to audio and visual. As I already told you, audio plus you can say vision. Right now what we are doing, Zoom पे जो हम कर रहे हैं, that comes under your audio visual means of communication. As our online class, as just a second, students. Hello. Good afternoon. Good morning, ma'am. Ma'am, my lecture is going on. It will end in 10-15 minutes, ma'am. So what happens over here is films, televisions, internet, computer, video cassettes, etc. They work as an audio-visual aids or means to communicate. Next is silence. Silence. How silence could be communication? Suppose आप घर पे गए और आपने मम्मी से बात करने की कोशिश की और मम्मी आपसे बात नहीं कर रही है, that means कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है. दया, वो वाली बात है कि मैंने कुछ लोचा मारा है और आप अपने आप को एनालाइज करने लग जाओगे एंड यू विल डू ऑल द थिंग्स even for which even your mom is not you can say angry on you. So silent is also being remaining silent or can be you can say sign of agreeing or disagreement. Kaise? For example, if I nod my head like this, I'm not using a single word. For example, what this gesture suggests, that I am accepting, है ना, that I accept whatever you are saying. If I am taking a lecture और पूर्वी मुझे सामने दिख रही है, वो पूर्वी ऐसे ऐसे अगर करे, करो तो पूर्वी ऐसे ऐसे करो. Yes, that means even without saying a single word, I understood that Purvi is accepting what I told. अगर पूर्वी इस तरह से करे, है ना, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अगर आपका यू कैन से फेस मूव करेगा, दैट वुड बी शी इज नॉट एग्रीइंग टू माय पॉइंट. अगर आई कैन, इफ आई वुड सी हर फेस लाइक दिस, आई वुड आस्क, यस पूर्वी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डोंट यू एग्री विद दिस? सो वी विल हैव अ कन्वर्सेशन. सो नंबर ऑफ टाइम्स विद इवन अ जेस्चर, अगर आप वो इस सिग्नल वाली बात करें, अगर सिग्नल पे खड़े हो और कोई जो द ऑफिसर वुड से दिस साइन मीन्स यू हैव टू स्टॉप. इवन रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट है तो भी अगर वो ऑफिसर बोल रहे रुक जाओ, क्यों रुक जाओ? क्योंकि कोई एम्बुलेंस आने वाली होगी, तो यू विल हैव टू स्टॉप. इवन विदाउट शाउटिंग, बाय यूजिंग जेस्चर, इसको क्या बोलते हैं हम? जेस्चर. जैसे दिस इज थम्स अप मीन्स यू एग्री, थम्स डाउन मीन्स यू डिसएग्री, है ना. व्हेन यू गो फॉर स्कूबा डाइविंग, दिस मीन्स डोंट नो, मतलब ऊपर जाना है, इसका मतलब नीचे जाना है. फिर ऑक्सीजन के लिए ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं. सो साइलेंस ऑल्सो, इवन विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड वी कैन कम्युनिकेट. सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज. सपोज एक बोर्ड मीटिंग चल रही है ना, एंड you have communication, you have eye contact with your employees, है ना.
and wherever you find कि भाई suppose कुछ गलत हो रहा है तो the boss will give some instruction to the employee, by even by eye contact they will understand and they will do the work. So these are the different means of communication which are used in business. Out of this, the most trustworthy would be your written communication. You can't trust oral communication, you can't trust silent communication, you can't trust or you can say um, anything which is ambiguous. And silence and oral communication, they are kind of ambiguous because the person would say कि I didn't mean to say that. If I would say अब इसका क्या मतलब हुआ ना, मैं हाँ बोल रही, मैं तो बोली मैं हाँ बोल रही थी पर लग रहा तो ना बोल रही हूँ. तो that kind of a confusion would be there in silence communication or oral communication. Sometimes you want to say something but the actual meaning would be some anything else. For example, I would give you example. If a child says कि mom I want to have an ice cream, and I would say yes, go and have ice cream, that means I don't want him to have ice cream. My words are different but my gestures are different. So the child, if he fails to understand that, he would be in big problem. Same in the organization, when it is in oral form or in silence form, there may be a miscommunication. So it is always advisable to get instruction or to give instruction in written form. It is the most trustworthy means of communication. Clear with this? What is communications? Methods of communication. Any difficulty in this? Any student? If you have, just send me the message. I will see. किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, please send me the message. That would be our written communication. And when I'll explain that, that would be your oral communication. Let me check if I have some message or not. No, till now no messages. So we'll move further. Next would be your formal communication and informal communication. Now formal communication is something where on the basis of rules, regulations, objectives, goals, or any other factors, a group of people come together and they have a formal relationship of superior and subordinate. For example, in a company, you will have a CEO of a company, then you have a manager, then you have a you can say supervisor, etc., etc. They turn out to be your formal communication. So sorry, formal communication. When a manager give instruction to his subordinate, that would be formal communication. In school, like right now, Rima ma'am called me. She had some work, so she was a principal and she gave me instruction. So that would be formal communication. When I get a call from my principal, that would be a formal communication. But when I get a call from my family members, that would become informal communication. Okay. So what is formal communication? Normally, formal communication should be in written form and it should be have a proper record. जो भी आपके formal communication है ना, it would be in the form of notice. You might have seen. We all know that on 26 जनवरी है या 15 अगस्त को we have parade. But till notice won't come, we won't utter a single word. We all know कि जन्माष्टमी को छुट्टी है, पर जब तक notice नहीं आएगा, I won't say कि जन्माष्टमी would be a holiday. Yes or no? Because I need to get a notice. अगर सपोज मैं ओरली कुछ विदाउट नोटिस कुछ बोल देती हूँ तो आई वुड बी इन प्रॉब्लम. कई बार बच्चे बोलते हैं मैम कल छुट्टी है, आई डोंट नो, नोटिस नहीं आया, आई डोंट नो. सो वी पुट दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिस memo where you need to get the sign of the employees that they got this information. That will create you can say or remove any kind of miscommunication or chaos in the organization. Okay. Normally the supervisor or the head of the department, they transfer this information, formal information, to the bottom level, and bottom level will report for this information. So either that is an order or reporting. In both the case, it is from top or to bottom and bottom to top. Okay. This is for example, यहाँ पे दिया है कि a letter of supervisor to subordinate for his transfer or प्रमोशन. मुझे पता है 10 दिन से कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, पर जब तक मुझे वो लेटर नहीं मिलता है, आई कांट से दैट आई विल बी प्रमोटेड. नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. सबसे पहला तो ये सुपरवाइजर जो है तो होता है, द सुपरवाइजर विल गिव दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन टू द सबऑर्डिनेट्स. सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ communication should be quite clear, है ना, कि why you want to communicate, why, what is the aim behind the communication. So proper you can say coordination, cooperation and clarity of objective is written,
Very important. Formal communication is generally in written form. Even if you get it in oral form, you will ask for written, you can say information. Suppose if in school, if I come in the school and some teacher would say tomorrow is a holiday, मैं बोलूंगी do we have the notice ma'am? आपने नोटिस पे साइन कर दी? जब तक मैं नोटिस पे साइन नहीं करूंगी तब तक मैं नहीं कंसिडर करूंगी that there was a holiday. Next is this is the accepted means of communication in an organization. In an organization, informal communication does not matter. For example, as a teacher, if I say that tomorrow will be the test, that is considered. पर आपका फ्रेंड आपको फोन करे, तुझे पता है कल टीचर टेस्ट लेगी, एंड देन यू कम टू मी, मैम आपने टेस्ट नहीं लिया, मेरे फ्रेंड ने बोला, मैंने बोला. सो कहने का मतलब ये है, फॉरली फॉर्मल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, not the informal information which you comes from you can say different unreliable sources. So your friend is the most unreliable source. Okay, if it comes from your class monitor, you can rely on that. But if it comes from your friend, you have to cross check with your monitor or your class teacher. Okay, next is your जैसे हमारी ग्रुप्स है, राइट नाउ वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, 12th ABC, दैट इज ग्रुप फॉर योर फॉर्मल कम्युनिकेशन. वी गिव ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन इन दोस ग्रुप. आपकी पर्सनल ग्रुप है, फ्रेंड के ग्रुप में कुछ भी मैसेज आए, इट इज नॉट ऑथेंटिक. ठीक है, 90% अनऑथेंटिक है. ठीक है. देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस objectives. What is your business objective? To earn profit, to gain from your people in the organization. And it is quite easy to understand. Everyone knows who will give instruction to whom, and everyone knows who will get orders from whom. So this is quite an easy and easy to do. You can say, and need of the organization. अगर हमारे पास informal communication नहीं होगा तो the organization won't be able to work. Just a second. Okay, fine. Next point, our next point on your page number 70 is informal communication. Now, informal communication, you can say, is created in the shadow of formal communication. If we talk about our school, then the principal ma'am, or you can say supervisors with teachers, they have formal communication. Okay, we have formal communication with our supervisors and principal and our colleagues, because we are working in this organization. But at the end of the day, sometimes we celebrate each other's birthday, है ना, or we celebrate certain festivals together. That comes under informal communication, and with that we share certain you can say formal information in informal way. For example, if some teacher is absent due to some reason, so if I want to put this information to her as she is absent, I will call any of her friend in the organization कि भाई ये इसकी friend है, भाई वो teacher को call करके message करके बता दो ना कि this is the instruction. So when a teacher calls her friend, that will come under informal communication. But when the principal calls a teacher, that will be your formal communication. So you can say, as two teachers work together in an organization, they become friends, and that is why they share few things, है ना, together. Maybe because of their taste, because of their liking about different areas, etc. We share our tiffins every day. That is part of your informal communication. No one forced us. ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब टीचर साथ में बैठ के खाना खाएं, but we do it because we like to be together, and we discuss about different problems, and we try to find out the solutions of those problems in different you can say ways. That is your part of informal communication. Okay, this is more flexible and simple. This is there is no criteria as such. जैसे हमारे नोटिस बोर्ड पे लिखा होगा there is one teacher, then supervisor and all. इस तरह से कोई क्राइटेरिया नहीं है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कि भाई कौन से टीचर साथ में बैठ के खाना खाएंगे या कौन से टीचर साथ में घर जाएंगे. That is not something which is written on a board. It is something which we have due to our liking, disliking, love, affection, etc. towards the people who are working together. And it should be there because it helps you to create coordination and credibility. For example, if some teacher is working on some project and she is running late, so the friend of her would help her. अरे तेरा काम complete नहीं हुआ, ला मैं I will help you. ठीक है. So at the end of the day, organization gets the benefit. The first teacher who has completed the work, second teacher will help her. She would help the second teacher so as to get the benefit of you can say work to be done at a given time. Suppose पूर्वी का homework complete नहीं हो रहा,
तो भाविका बोलेगी तेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, ला 4 पेज मैं लिख दूं। ऐसा करते हो भाविका? कभी आपने हेल्प की है अपने फ्रेंड की? हिनल, डू यू हेल्प योर फ्रेंड? Yes, ma'am. कौन है आपका फ्रेंड? Uma. उमा, ओके। तो सपोज उमा का, अच्छा इसीलिए उमा तेरा होमवर्क इसीलिए कंप्लीट होता है बिकॉज हिनल तेरे को हेल्प करती है। नाउ आई गॉट द सीक्रेट, ओके। नो No, no, ma'am. Homework में help नहीं करते हैं. हाँ, तो जैसे होमवर्क तो अपना अपना दोनों करते हैं। नहीं, तो जब भी उमा का होमवर्क कंप्लीट होगा तो मैं हिनल को भी अप्रिशिएट करूंगी, है ना। सीक्रेट बिहाइंड होमवर्क कंप्लीटेड बाय उमा इज हिनल. So Hinal and Uma, they are good friends, they help each other. That is a part of their job, you can say informal communication or part of informal organization. But when I would help Uma, that would be part of formal communication or formal organization, because I work as a teacher here and you are admitted as a student over here. I won't take a random student on from, you can say, in this world and teach them. I teach only the students who are admitted or who get admission in our Rajasthan Seva Samiti Sanchalit Rajasthan school. So we have formal relation, but by the end of the year, when the year ends, we create a kind of a bonding. When you come to 11th standard, first time जब आप 11th standard में आते हो, we have formal communication. But when you leave in 12th standard, we have both formal as well as informal communication. पहले हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता है, फिर हमें सब कुछ पता है। ओके, 10 minutes to go, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। Let us move further. Okay, what is informal communication? इसमें होता है it depends on human relation. मतलब you like a person, you dislike a person. क्लास में 40 बच्चे हैं पर मेरे फ्रेंड सिर्फ 4 हैं, because I like or dislike few. I like few things about those 4 people. I dislike few things about the other people. There is no control or order required over here. In formal communication, you have rules, regulation, controls, etc. But in informal communication, there is nothing like that. It is something which is done orally or due to with the help of symbolic language. मतलब टीचर ने पूछा कि इसका आंसर क्या है, तो पीछे से कोई पीछे से उंगली करके बोलेगा फर्स्ट है बोल दे, है ना। टीचर के पीछे से खड़े होकर आंसर बताएंगे, तो वो क्या है, इट इज थ्रू orally or symbolic language से we make this friendly gesture and we create this kind of a good environment, good sympathetic and coordinative environment in the organization. Okay, it depends on how friendly a person and human he is. So there are certain person who don't like, they are introvert in nature, so they may not have the informal communication, they just have the formal communication. Next, it is flexible and easy to understand. Process is not important in this communication. हम फर्स्ट डे पे फ्रेंड बन सकते हैं, हम 10 दिन बाद फ्रेंड बन सकते हैं, हम कभी भी फ्रेंड ना बने. So there is no rules and regulations for this formal communication. It helps increase the coordination and credibility of organization. It is not supplementary but complementary for the organization. ठीक है? So we will stop over here on your page number 70. Any difficulty till this point? No, ma'am. No? Okay. So for today, your homework would be write down I hope all of you, by the time you know what would be the homework, what is formal and informal communication. What is formal and informal communication? Explain with the help of diagram. Fine. So this will be your homework for today. As well as I want all of you to make the diagram of communication. Ma'am, would you like to talk with the students? 12th ABC.
of If they have left, it's no, they haven't left. अभी खत्म ही होने वाला है. Just I'm giving homework. This will be your diagram of communication, means of communication. है ना? That will be your homework. Written all of you. I should want both all of you to complete that. Now I would like all of you to talk with our principal ma'am. Here, just a second. Let me close. Just a second. Ma'am, this is 12th ABC students. 12th ABC? Yep. All together? Because we have same teacher taking the subject. You can Good see. morning, ma'am. Uma, Good morning. Rashmi, open your morning, camera. Good morning, ma'am. Good morning, children. How are you? I informed them to open their camera as well. Fine, ma'am. Fine, Fine, yeah, ma'am. good. How are you? I hope you are preparing for the board exams. Yes. Do Yes, not ma'am. be under the impression that your exam will not be conducted, okay? Yes. And rather your exam will be even more difficult for you people because you are having all virtual lessons. And focus more on your textbook than digest. And children who are not attending the class, encourage them to be present. Ma'am, the students, monitors are there. They Yeah, take care of very that. good. They I'm take so care. happy to see your bright faces. We miss you all. All of We you, love you all also. open your camera, all the students. Krupa, Khushi, Harshit, Abhay, Priyanshu, Jatin, Jinay, Rashi, How do you feel if you don't come to school? Chavi, Jeel, अपना कैमरा ऑन करो. सार्थक, कैमरा ऑन कर. Do you Ma'am, miss school? Ma'am, he never does homework. Sarthak. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. missing, ma'am. Yeah, we miss you all also. It's a historical year for all of you because Yes, it is ma'am. during the pandemic that you are in the 12th standard. And all of you should pass out with good results. Whichever competition you have, you should be able to focus and compete in those exams also. Okay? God bless you all, children. We miss you a lot. We really miss you. Giving you a big hug. Okay? Thank you, ma'am. Thank ma'am. Thank you. Thank you. What is that? She wants to talk. Come. Hello. 1 minute, wait. Yes, students. Now Dhwani ma'am wants to talk with you all. Just a second. सब लोग अपने कैमरा ऑन करो, माइक्रोफोन ऑन करो. कितनी बार बोलूं बेटा मैं? एक ही चीज 10 बार बोलने पड़ता है. वो तो 12 स्टैंडर्ड है. Hello everyone. Good Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Afternoon, ma'am. Good morning, Good. ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी चलेगा. कैसा कर रहे हो सब लोग? ठीक हो? तबीयत पानी सबकी अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास Yes, हाँ, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, बस ma'am. हाँ, पर्टिकुलरली मुझे इसीलिए बात करने की इच्छा हुई कि जितने भी मैं नोट्स भेजती हूँ ना ग्रामर की, आप लोग अपनी ग्रामर की नोटबुक में ज़रूर लिख लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि ग्रामर के लिए अगर नोट्स नहीं आप लोग पढ़ोगे या फिर मेरा रिकॉर्डिंग नहीं सुनोगे तो नहीं हो पाएगा. बराबर. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा जो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं, मैं उनके सॉल्यूशन भी देती हूँ. तो आई विश के आप सब लोग भी, ऐसा नहीं कि 4-5 बच्चे या 10-12 बच्चे ही इस तरह से कांटेक्ट में रहे और अपनी क्वेरी पूछे. आपको कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क बिकॉज यू आर इन ऑल 12th स्टैंडर्ड. बराबर. आपके लिए थोड़ी चिंता होती है कि भाई किस तरह से आप कर पाओगे, पर अगर आप सामने से आके मुझे नहीं कहोगे तो इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा ऑनलाइन टीचिंग में. बराबर. समझ में आया बच्चों? तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैं आपको फ़ोन में दिखाऊं तो फ़ोन मुझे कितना सारा डिलीट करना पड़ता है कि
रेगुलरली दे आर आस्किंग मी कि मैडम इस सेंटेंस का ये आंसर कैसे आया, आपने ये आंसर क्यों लिखा है, इसमें क्या आएगा, सब कुछ होता है। 12th स्टैंडर्ड में से कोई क्वेरी अभी तक नहीं आई है, माने सब लोग होशियार हो गए इंग्लिश में, है ना, सब लोग एक्सेलेंट हो गए, है ना। माने ना क्वेरी हो ऐसा तो ना हो सके बेटा, बराबर। आपको समझ में सब कुछ आए, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्लियर? तो आई एक्सपेक्ट यू एवरीबडी कि प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट करो ना समझ में आए तो। ओके, चलो आपका टाइम आउट हो रहा है। बाय एवरीबडी। ओके, बाय टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय मैम। Bye. बाय। Bye, ma'am. बाय बाय बाय। Okay, students. So as time is running out, so we will end our meeting over here. Goodbye for now, students. Stay home, stay safe, and prepare for your test. Okay, this is the only thing I always repeat. So do that and keep doing your homework and regularly attend the lectures. Goodbye, students. Goodbye for today. Tomorrow we'll have lecture 10.